बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा सलीम है। आज हमारा बेसिक डिज़ाइन का सेकंड लेक्चर है कलर चार्ट। कलर चार्ट में हम डिफरेंट टिंट और शेड पढ़ेंगे। A color chart to color a color chart or color reference card is a flat physical object that has many different colored samples present. They can be available as a single page chart in the form of sketchbook or color matching fans. Typically, there are two different types of color charts. Color reference charts are indeed of color comparison and measurement. Typically, tasks for such charts are checking the color reproduction of an imaging system, adding in color management, or visually determining the hue of color. ह्यू ऑफ कलर मतलब प्योर कलर टिंट और शेड बनाने के लिए हम एक प्योर कलर यूज़ करेंगे। टिंट बनाने के लिए वाइट और शेड बनाने के लिए ब्लैक कलर। कलर सिलेक्शन चार्ट present a palette of available colors to add the selections, spot color, process colors, patterns, crayons, and usually the colors are from manufacturer producing range. कलर वैल्यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलर वैल्यू स्केल्स। ह्यू ऑरेंज टिंट बनाने के लिए उसमें वाइट ऐड किया गया है, जैसा कि हमें इमेज में नज़र आ रहा है, और शेड बनाने के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया गया है। टिंट की तरफ आएँ तो हमें ऑरेंज लाइट, उससे लाइट और एंड में बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है, और शेड में जाएं तो डार्क उससे डार्क और एंड में हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। उससे अगला कलर भी ऐसे ही, ऑरेंज की लाइट शेड, उससे लाइट येलो। एक कलर से हमारे बहुत सारे न्यू कलर्स डेवलप होते हैं। आगे येलो, फिर ग्रीन्स के शेड आए, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, पर्पल, वायलेट, मैजेंटा, सारे कलर्स के शेड्स को, ह्यू कलर्स को टिंट और शेड में तब्दील किया गया है। ह्यू कलर्स मीन्स प्योर कलर। हर कलर टिंट ह्यू कलर्स मतलब जैसे स्काई ब्लू, तो उसके 4 शेड्स बनाए गए हैं और 4 ही टिंट बनाए गए हैं। शेड में भी एंड वाला शेड में हमें ब्लैक नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि इसमें लाइट कलर है, इसमें कौन सा कलर यूज़ किया गया था। और टिंट में भी लास्ट वाला कलर हमारा बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टिंट्स और लाइट वर्जन ऑफ द कलर that are made by mixing color with white. Red shades are darker version of the color that are made by mixing a color with black. For example, pink is a tint of red, while maroon is a shade of red. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिंट, शेड और टोन्स। टिंट में रेड कलर में वाइट डाला गया है, शेड्स के लिए रेड कलर में ब्लैक कलर डाला गया है, टोन्स वाइट और ब्लैक मिक्स। टोन्स के अंदर
वाइट कलर की एडिशंस की गई है। In color theory, I tint a mixture of a color with white which increase lightness, while a shade is a mixture with black which increase darkness. Both process effect the resulting color mixture. Relative instructions a tone is produced either by mixing a color with gray or by both tint and shading. जैसे हमें इमेज में नज़र आ रहा है, टिंट बनाने के लिए रेड के अंदर वाइट ऐड किया गया है और शेड बनाने के लिए रेड के अंदर ब्लैक ऐड किया गया, और टोन्स के लिए रेड के अंदर ग्रे टोन ऐड की गई है, ग्रे कलर यूज़ किया गया है। इस तरह हमारे पास न्यू कलर, टोन और एक कलर के इस तरह हम हज़ारों रंग बना सकते हैं। एक कलर से डिफरेंट न्यू कलर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट कलर मिक्सचर से। एक ही रेड कलर से 6 कलर दिखाए जा रहे हैं, स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। टिंट के साथ 2 कलर, शेड के साथ 2 कलर, टोन्स के साथ 2 कलर्स। आगे हमें कलर वैल्यू दिखाई गई है। प्योर ह्यू मतलब प्योर कलर, प्योर रेड। रेड के अंदर वाइट ऐड किया तो टिंट न्यू कलर आ गया पिंक हमारे पास। इसी तरह प्योर ह्यू मतलब प्योर रेड कलर यूज़ किया, उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट मतलब ग्रे कलर यूज़ किया तो न्यू टोन आ गई हमारे पास। और नेक्स्ट प्योर ह्यू मतलब प्योर रेड प्लस ब्लैक, प्योर में ब्लैक कलर ऐड किया तो हमारे पास न्यू कलर आ गया शेड। 2 कलर की मिक्सिंग से हमारे पास तीसरा कलर टिंट, टोन और शेड न्यू डेवलप हुए। इक्वल दोनों हर कलर प्योर ह्यू के साथ वाइट और प्योर ह्यू रेड इक्वल क्वांटिटी में डाला तो न्यू कलर आया। ब्लैक एंड वाइट प्योर ह्यू इक्वल, वो भी इक्वल क्वांटिटी में डाला तो न्यू टोन आई हमारे पास। और नेक्स्ट है प्योर ह्यू और प्लस ब्लैक, दोनों इक्वल क्वांटिटी में डाले तो शेड न्यू कलर हमारे पास डेवलप हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस ब्लैक a shade or a color।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इज अ ब्लैक शेड और अ कलर. Some consider white to be a color because white light compares all hues on the visible light spectrum, and many do consider black to be a color because you combine other pigments to create it on paper. But in a technical sense, black and white are not colors, they are shades. इसमें ये बताया गया है कि वाइट और ब्लैक जो है वो कलर्स नहीं हैं, वो जस्ट शेड्स हैं. शेड्स. Technical sense, black and white are not colors, they are shades. नेक्स्ट हमें शेयर चार्ट स्क्रीन पे नज़र आएगा. शेयर चार्ट वाइट एंड ब्लैक का है. वाइट एंड ब्लैक का शेड चार्ट होगा. वाइट के अंदर ब्लैक की क्वांटिटी एंड में ब्लैक नज़र आ रहा है. वाइट, ग्रे, लाइट ऑन ग्रे, देन ग्रे, देन डार्क ब्लैक एंड पे ब्लैक. और अगर ब्लैक से स्टार्ट करें तो ऐसे ही लाइट ब्लैक, मैचिंग ब्लैक, और आगे लाइट टोन्स होते जाएंगे, ग्रे, लाइट ग्रे, सिल्वर, एंड में प्योर वाइट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिंट एंड शेड्स. टिंट और शेड में आप लोगों को फ़र्क की तो समझ आ गई होगी कि वाइट कलर ऐड करने से टिंट न्यू न्यू टिंट कलर टिंट आता है हमारे पास, और अगर उसी कलर के अंदर ब्लैक कलर डाला जाए तो यूज़ किया जाए तो हमारे पास शेड बन जाता है. सम टिंट्स शेड्स ऑफ ह्यू. In color theory, a tint is mixture of color with white, which increase lightness. While a shade is a mixture with black, which increase darkness. Both process effect. The resulting color mixture, relative saturation or tone, is produced either by mixing a color with gray or by both tinting and shading. Mix, Mixing a color with any natural color, including black, gray, and white, red, reduce the
chroma or colorfulness wheel. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे the hue, the relative mixture of red, green, blue, etc. depending on the color space remains unchanged. In the graphic art, especially printmaking and drawing, tone has a different meaning. Different meaning of referring to areas to continuous color produced by various means as op- opposite to the liner marker made by an engrave or draw line. In common language, the term shade can be generalized to, furthermore encompass any varieties of a particular color, whether technically they are shade, tints, tones, or slightly different hues. Meanwhile, the term tint can be generalized to refer to any light or darker variation of a color. When mixing color light, the chromatic mixture of spectrally balanced red, green, and blue is always white, not gray or black. When we mix color currents such as the pigment in paint mixture, a color is produced which is always dark, darker and lower in chroma or saturation than the print colors. Then the brand color, these move the mixed color towards a natural color. A gray or near black lights are made brighter or dimmer by adjust their brightness or energy level in painting. Liners is adjusted through mixture with white, black, or a color complement. नेक्स्ट हमें दिखाया गया है पिक में प्योर कलर, प्योर ब्लू कलर है और टिंट के लिए ब्लू के अंदर वाइट ऐड किया गया है तो वो ब्लू की लाइट ऑन आ गई है। टोन के लिए ग्रे कलर ऐड किया गया है तो वो ग्रेइश स्काई ब्लू सा आ गया। और शेड के लिए ब्लैक कलर किया गया तो वो डार्क ब्लू शेड में यूज़ हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिंट और शेड। शेड A shade is simply any color with black added. Shades are deep, powerful, and mysterious. They work well in a mescaline environment and are best used as dark tint. A tint is sometimes called a
Pastel is simply any color with white added. A color scheme using tints of is soft, youthful, and soothing. Tints would work well in a girl's home of a website target to women. इस तरह में शेड और टिंट का फ़र्क वाज़िया दिखाया गया है। टिंट ह्यू कलर्स के टिंट के बाद हमें लाइट और कूल कूल सा इफेक्ट नज़र आ रहा है वाज़िया, और शेड्स में हमें डार्क गर्म इफेक्ट दिखाया गया है। इस तरह इस पूरे लेक्चर में हमने टिंट और शेड्स के बारे में पढ़ा, टिंट और शेड्स की डिटेल्स पढ़ी।